Donc, pour l'hiver, lorsque l'hiver vient, nous préparons nos vêtements plus chauds, quelle que soit la situation qui va venir. Nous nous préparons et nous sommes prêts pour cela. Et nous devrions être prêts intérieurement pour n'importe quelle situation parce que vous devez faire face et vous devez être préparé. Dans de quelque façon que ce soit, devriez-vous garder prêt, utiliser le pouvoir du silence et rester dans la grotte de l'introversion. Et c'est pourquoi Baba nous donne ce signal pour demain. Om Shanti, c'est la révision du Murli depuis 1969. अव्यक्तवाणी तारीख है 24 जून 1972। Donc, c'est le Murli Aviak du 24 juin 1972. Devenez prêt et invoquez les derniers instants. अपने को बाप समान समझते हो Vous considérez-vous comme égal au Père? करते हो Vous sentez-vous proche du niveau d'être égal au Père? Quelle est la différence qui vous sépare encore लक्ष्य तो सभी de l'égalité avec le Père? कि बाप Y समान a-t-il बने une grande ou une और petite बाप का लक्ष्य différence? है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। Le but de chacun est de devenir égal au Père et le but du Père est que les enfants deviennent encore plus élevés que le Père. Qu'en est-il dans la pratique? किसका कितना अंतर N'avez-vous pas encore développé le pouvoir de faire face सभी का एक समान de la même manière que le Père? 50% अंतर तो बहुत है इसको कितने समय में मिटाएं La différence est number-wise en fonction de अपना बाप और l'effort. बच्चों में इतना अंतर क्यों अपने को एवरेज Certains समझते ont हो une petite différence, d'autres une grande différence. La करोड़वें का différence n'est pas la même pour tous. Une différence de एवरेज 50% est कैसे plus grande, la plus grande मानते हो différence. En combien de temps कुछ finirez-vous cette एवरेज différence? Pourquoi y a-t-il encore cette वह différence आह्वान entre le Père et les enfants? अपने को Vous vous सतत considérez comme toujours prêt, n'est-ce pas? Que अंतिम समय का signifie être सागर toujours prêt? Ceux qui sont अपने toujours आप prêts होना है invoquent le temps. अगर समय आ जाए तो Ceux qui sont toujours prêts 50% se tiennent समानता की प्राप्ति क्या aussi होगी toujours prêts tout en invoquant le temps. एवरेडी Vous devez आत्मा को maintenant être सर्वगुण संपन्न préparé. अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला संपन्न तो होना है ना Donc, ज्ञान vous devez विज्ञान maintenant vous सर्वगुण préparer à affronter les संपन्न derniers बनाने moments. वाला Si ce moment arrive maintenant, l'accomplissement sera de संपन्न तो 50%. होना है ना ज्ञान Quel विज्ञान serait सर्वगुण l'accomplissement de संपन्न l'égalité avec le Père? Être toujours prêt signifie être quelqu'un qui se remplit तो constamment एवरेडी de आत्मा toutes les सर्वगुण vertus et समझ pour tous les ऐसा derniers moments. प्रैक्टिकल में हो Vous devez vous remplir, जैसे n'est-ce एक pas? On कदम chante उठाने के लिए empli de toutes les 16 vertus, 16 degrés कदम célestes बढ़ने में complet. कितना समय Ici, लगता है être toujours prêt signifie avoir un इतना niveau ampli स्वतंत्र होना et चाहिए complet. Vous devriez avoir atteint ce यूं कहें niveau कि si concret 80% qu'il ne vous reste plus qu'à faire un 80% pas de कहाँ plus. 50% Combien de फर्क होगा temps faut-il pour faire un pas? Il ne devrait y ऐसा avoir que cette एवरेडी différence. C'est ce qu'on सभी appelle गुण la différence de संपन्न 1 ou 2 बाप के समान Il y a बनाने une के लिए grande différence entre 1 ou 2 et आप 50 तीन Pour être चीजें toujours prêt et सीख empli de सकते toutes les हैं vertus comme le Père, उनकी प्राप्ति chacun होगी d'entre vous a reçu संपन्न trois choses कोई सीख principales. प्राप्ति Si vous avez atteint ces trois चाहिए choses, il कौन ne सी vous faudra प्राप्ति pas longtemps pour devenir शांति égal au समाधान Père. और सेवा Quelles sont ces trois चाहिए choses और करने की que le बात Père सभी a données? लेकिन Shrimat, la renonciation et le service.
Vous avez parlé de choses que vous deviez faire ou que vous considérez comme telles, mais que donne-t-il? किसके आधार से Vous pouvez rendre service, vous pouvez aussi vous abandonner, लेकिन दिया क्या mais sur la base de quoi? वर्षे में Vous avez भाग्य क्या pris naissance, mais करे que vous a-t-on donné? Quelle est बाबा la chose हमारे हृदय principale से तो qu'il आदेश donne en héritage? सिर्फ स्पष्ट Et रूप chacun में avait sa propre idée, mais bien que स्वीकार vous करते ayez हैं mentionné la signification पहले पहले देते हैं pour la माइट clarifier, दूसरा on vous देते parle, हैं माइट on vous en parle तीसरा sous देते une हैं forme लाइन ऑफ différente. साइट अर्थात तीसरा Il नेत्र donne d'abord la दूसरा lumière, आगे की मूली la सहस्र मूली force et enfin la अनुशासन vision divine, c'est-à-dire le troisième œil. Et on va continuer demain. Om Shanti.